देखिए हमें रिलेशन विद द नेबरिंग कंट्री ऑफ अनुसार fault को डिवाइड कराई सो fault is divided into four types on that basis on this basis तो हमको दे strike fault so it is different from strike slip तो strike slip रे हम कौन करथले हमरा रेक सबरे को 0 डिग्री तो strike slip fault बट strike fault रे कोन हो जदि तुम्हार fault plane रो strike so एटा होस fault plane रो strike and this is an bed so bed रो strike हो चाहिए ना यदि strike of the fault plane it is parallel to strike of contour. Fault plane रो strike ଆଉ तो neighboring beds हो ताकर strike यदि सेम रहबा ताल सेटा कोन strike fault सेटा गोटे strike fault नै परिबा it is also a कोन deep slip fault एना एठी तुमरा रेक पूरा एमती क्रिएट हेबे तो deep slip fault हेबे तर किंतु हमको यदि strike fault देखिबार अछि माने तुमे देखिबा के fault plane रो strike neighboring जो bed अच्छा contour अछि तार strike तो if both are parallel to each other then it is a strike so this is a deep fault एटा उसका deep fault तुम्हारा see this is the neighboring rock বা contour rock एटा तुम्हारा fault plane this is the strike of the fault plane एटा fault plane रा strike now this bed dips in this direction a direction e dip course so तार dipping direction of fault plane strike they are parallel to each other so that is a there is a condition for what deep fault पहले क्या होगा deep fault so strike of the fault plane parallel to the deep direction of the bed then oblique fault the contour it is inclined to the strike of the fault plane so fault plane रो strike को contour रो strike को थवा obliquely थिबो बा गोटे angle थिबो ता कोन oblique fault so in case of bedding fault the attitude of the bed by contour rock रो attitude माने कोन deep और strike will be exactly as the fault plane तो fault plane रो जहां deep और strike थिबो contour rock रो से या deep and strike तर से केस तक हो गया it is a bedding fault है ना so attitude of the contour rock is equal to or same as the attitude of the fault plane it is called as a bedding fault on the basis of apparent movement of fault blocks fault is classified into three types one is the normal fault the reverse fault the strike slip fault normal fault reverse fault strike slip fault so it is तुम्हारा footwall और hanging wall block रा movement अनुसार divide कराए तो footwall कोटा hanging wall कोटा जानछा fault plane रा तळे जे रहे से footwall fault plane रा ऊपर जे रहे से hanging wall जदि hanging wall downward move करछ और footwall upward move करछ it is a normal fault it is a normal fault जदि hanging wall upward move करछ footwall downward move करछ ताले it is a reverse fault so first normal fault लेबा the hanging wall moves downward or the footwall move upward the fault is called as your normal fault so under the normal fault we have
two types of fault. गोटे कहते हैं हॉस्ट, गोटे कहते ग्राबेन है। सो ग्राबेन होची इट इज ए पेयर ऑफ नॉर्मल फॉल्ट। तो एपट गोटे नॉर्मल फॉल्ट है, एपट गोटे नॉर्मल फॉल्ट है, पेयर ऑफ नॉर्मल फॉल्ट विथ ए कॉमन डाउन थ्रोन साइड। द कॉमन डाउन थ्रोन साइड, डाउन थ्रोन मींस होची जोटा मोर तळवाड मूव करे बा डाउनवर्ड मूव करे ताको डाउन थ्रोन कहंती, जोटा अपवर्ड मूव करे ताको अप थ्रोन हैला। सो एठी मोर होस्ट ग्राबेन होची गोटे पेयर ऑफ नॉर्मल फॉल्ट, एमती माने पेयर माने कोन दीटा नॉर्मल फॉल्ट अछि with a common down from side, now right side का down down। So this is used to कोन hanging wall, this is footwall है। एटा कोन अछि फॉल्ट प्लेन अछि, फॉल्ट प्लेन ऊपर जे रहै छै कोन हैंगिंग वॉल, एटा फॉल्ट प्लेन अछि, फॉल्ट प्लेन ऊपर जे रहै छै कोन हैंगिंग वॉल। ए केस रे तुमर एठी दीटा पेयर ऑफ नॉर्मल फॉल्ट अछि बट दे हैव ए कॉमन अप फ्रंट साइड। तुमर हैंगिंग वॉल रहला, एटा फुटवॉल रहला। तो एठी भी हैंगिंग वॉल टा कोन तळो मूव करछि, फुटवॉल टा ऊपर ऊपर मूव करछि। तो these are types of normal fault कहि परिया हमें, these are types of normal fault। तो बहुत इंपोर्टेंट में ऑलरेडी स्टैटिक रहते तो होस्ट ग्राबेन का। तो ग्राबेन होची इट इज ए पेयर ऑफ नॉर्मल fault having a common down from side, a host is a pair of normal fault with a common up from side। then comes to strike slip fault। strike slip fault रे जो है कि normally they move along the fault plane, so fault plane along move करछि, there is no footwall hanging wall in case of strike slip fault। strike slip fault रे कोनो सी footwall hanging wall नथा, they move parallel to the strike of the fault plane, fault plane strike to parallel move कर दीटा ब्लॉक है। so they can classify into two types, गोटे सिनिस्ट्रल गोटे डेक्स्ट्रल। माने बेले बेले तुम देखो गोट ब्लॉक गोटे तुम राइट साइड तुम आड़ मूव करिवो, बेले बेले लेफ्ट साइड तुम आड़ मूव करिवो। से अनुसार तुमर कोन दीटा टाइप ऑफ फॉल्ट होय छै, गोटे स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट, गोटे सॉरी सिनिस्ट्रल फॉल्ट, गोटे आ गोटे डेक्स्ट्रल फॉल्ट। सो सिनिस्ट्रल को हमें लेफ्ट हैंडेड कहंती आ डेक्स्ट्रल को हमें राइट हैंडेड। बाद में जोटा कि डेक्स्ट्रल अछि ताको राइट लैटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट कहि परियो, जोटा सिनिस्ट्रल अछि ताको लेफ्ट लैटरल स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट। केमिति जानिबो कोटा लेफ्ट कोटा राइट, वो ब्लॉक रो मूवमेंट है। तो यदि फॉल्ट प्लेन को फेस करके छिड़ा होता है, फॉल्ट प्लेन को फेस करके छिड़ा तो जो साइड तो जो साइड तुमरा राइट साइड ब्लॉक तब डेक्स्ट्रल, यदि लेफ्ट साइड ब्लॉक मूव करछि ताले सिनिस्ट्रल। तो फॉल्ट प्लेन को कम फेस करके छिड़ा। तो एठी हमर एटा डेक्स्ट्रल अछि, एटा सिनिस्ट्रल अछि हला। दिस करा जो टियर फॉल्ट अब टियर फॉल्ट और तुम्हें रेंज फॉल्ट कहि परियो। So the fault होची it will cut across the bedding plane, but the bedding plane जो strike को cut करो हला, सेपरेट करो, जते ताको हम टियर फॉल्ट बा रेंज फॉल्ट देखा। so this is a tear fault, a variety of strike slip fault or types of strike slip fault where it will cut across the strike of the bedding plane। next is reverse fault। so reverse fault case रे कोन जोड़ा in normal fault पूरा hanging wall moves downward with respect to footwall or footwall move upward, अभी उल्टा काटी hanging wall टा move upward with respect to footwall or footwall move downward। आता रिवर्स फॉल्ट होची तुम्हारा एटा होची कोन हैंगिंग वॉल, एटा होची फुटवॉल। तो हैंगिंग वॉल मूविंग अपवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फुटवॉल और फुटवॉल मूव डाउनवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू हैंगिंग वॉल। तो रिवर्स फॉल्ट नॉर्मली होवे तुम्हारा लो एंगल रहिबा है ना। तो फॉल्ट प्लेन रो डिपिंग एंगल बहुत लो हे करो 9 डिग्री 10 डिग्री पर द डीप हे है ना। तो किंतु नॉर्मल फॉल्ट रो सब हायर एंगल हो 30 डिग्री एबव 40 डिग्री बराबर पे, किंतु रिवर्स फॉल्ट रो बहुत हाई बहुत लो एंगल लगी पे। सो लो एंगल रिवर्स फॉल्ट को कहते थ्रस्ट फॉल्ट, लो एंगल
reverse fault. The thrust fault 30 degree ରୁ କମ ହେଲା। ତା अंडर दुटा आसे गोटे ओवर थ्रस्ट गोटे अंडर थ्रस्ट। तो ओवर थ्रस्ट रे कोन होबे हम दुटा कंडीशन है जे हैंगिंग वाल मूव करियो नले फुटबॉल मूव करियो। ताले हैंगिंग वाल यदि अपवर्ड मूव करे ताले ओवर थ्रस्ट, यदि फुटबॉल डाउनवर्ड मूव करे ताले अंडर थ्रस्ट। किंतु एंगल कोन रहबो फॉल्ट प्लेन नो डिपिंग एंगल लो रहबो है ना। So this is a normal fault. So normal fault football upper अछि बा हैंगिंग वाल तळ मूव करछि। So it can be deep sleep fault. देखो है करो deep sleep fault एटा ओटा रिवर्स fault it can be deep sleep fault. Right rate show 90 years. एटा जो strike sleep fault एटा ओटा fault है तो तुम्हें रिकॉग्नाइज करिवो कोटा हैंगिंग वाल कोटा फुटबॉल। तो एटा हमर फुटबॉल होछि एटा हैंगिंग वाल होछि। अब ये हैंगिंग वाल कोन ऊपर को मूव करछि तो इट इज अ रिवर्स fault। ता सहित इट इज कोन oblique sleep हाँ oblique sleep। तो एक बार डिटरमाइन कर करो तुम्हें डिफरेंट टाइप ऑफ फॉल्ट। इसको तो हिंज फॉल्ट। तो हिंज फॉल्ट मतलब इट इज अ टाइप ऑफ रोटेशनल फॉल्ट। तो जतले हमर फॉल्ट ला डिटैच होची इट इज डिटैच फ्रॉम बोथ एंड। तो आर कोन गोटे एंड फुटबॉल पार्ट मोर फुटबॉल हैंगिंग वाल पूरा दिनारो गोटे एंड रे कनेक्टेड थे सेटा कोन हिंज पॉइंट तो हिंज पॉइंट। तो से अनुसार ये कोन एमते रोटेट करिवो हां ये रोटेट करिवो। तो गोटे पॉइंट रखले कोन हो एमते रोटेट करिवो करबे कि नहीं। तो आको हमें कहंती रोटेशनल फॉल्ट बा हिंज फॉल्ट बा ता अदर नेम तो सीजर फॉल्ट होय करिवो। कोइन छुड़ा देखा कोइन छुड़ा लगे सीजर फॉल्ट बा पाइवट फॉल्ट। तो इट इज अ रोटेशनल फॉल्ट। ये कोन गोटे पर्टिकुलर पॉइंट रे रोटेट करछ। अब जते तुमे तुम कांटेक्ट पॉइंट रो जते आवे जीवो सेते दीटा फॉल्ट ब्लॉक भितरे डिस्टेंस से चेंज हो कि नेट स्लिप टा कांस्टेंट रखना है। It's come to listric fault. So listric fault no, it is a type of fault where the fault plane is curved. Fault plane ना कौन curved है। स्कूप बड़ा लंबा जो बात दिखावे से बड़ा दिखा fault plane। अब सब बड़े fault plane का बोले तो प्लानर बड़ा देखो सब केस में but fault plane भी कौन curve है। सही टाइप ऑफ fault को हम कौन सी listric fault। है कि तुम्हारा fault plane टा एक देखो fault plane टा कौन है curve है। समझ curve है। तो जेतु कर्व हेछि तार तुमे पर्टिकुलरली सब पार्ट रे सिमिलर टिप पाइबो नाही। वे टॉप पार्ट रे पाइबो स्टीपर टिप पाइबो जते तळ बुझो सेते जेंटल टिप पाइबो। देखो एटा स्टेप फॉल्ट होछि इज द टाइप ऑफ फॉल्ट और यू कैन से कि गोटे पर्टिकुलर फॉल्ट रे इज अ ग्रुप ऑफ फॉल्ट्स है। सो दीज आर कैन से नॉर्मल फॉल्ट with a continuous down thrown side in a particular direction. Yeah. So যদি তোমার পাখে নরমাল ফল্ট আছে নরমাল ফল্টস having down thrown side sides in one direction. The fault planes will be parallel to each other. Fault plane को हमें parallel है तो देखिए fault plane को पुट कर they will be parallel to each other. So it is called as a state fault.